this thing wouldn't have been possible. Thanks a lot, Jyoti. So this book is all about having a dream and achieving it. So I am basically a storyteller. I'll begin with a story. You know, once in a jungle, there lived a lion family. Are you comfortable in English, all these guys, or should I speak in Hindi? You can mix. Okay, a little masala mix. Anyway. English. So there was a lion family, and the lion, the lioness, and the lion cub, they used to live together. So once what happened in the evening, the lion cub went playing. वो खेलते खेलते दूर निकल गया और वो अपने परिवार से बिछड़ गया. So he was separated from his family. So there was a there was a herd of sheep that was going. So the mother sheep found pity on him, and mother sheep adopted the lion cub. So the lion stayed with the sheep, and he started behaving like a sheep. You know, he used to eat grass. He used to even bleed like a sheep. So what used to happen when in the jungle there used to be a roar of a lion or a tiger, the lambs used to be scared. They used to hide behind the bushes and behind the rocks. So the lion cub also used to do the same thing. And like this, he grew up, always feeling like he is a sheep. So one day what happened, when they were playing, there was a roar of the lion. So like always, all the lambs, they hid themselves behind the bushes and rocks. But that day, something happened. Something deep within the lion cub touched him. And he realized that he is no more a sheep, he is no more a lion, he is no more a lamb. And he opened his mouth and let out a loud roar. The whole jungle, you know, was shocked to hear the roar of a lion. So most of us deep down we know that we are lions, but because of others, because of our groups, or because being in the family, we believe like sheep. We have tremendous power inside us that is only waiting to be awakened. You know, how many of you have read biology? All of you. What is the smallest part of the body, smallest portion of the body? The cell. And the cell has got mitochondria. Right? What is mitochondria? It is the powers of the cell. So each mitochondria produces microvolts of energy. And how many cells we have in a body? We have around 150 trillion cells. So the human body produces 150 trillion microvolts of energy. And that is billions of volts of energy. And billions of volts of energy. And if it is possible to tap this energy, we can give power to the entire city. So that much of energy every one of you has. You believe it. That is the energy you have. And second thing you require is intelligence. So tell me which is the best computer, a desktop computer or a laptop computer? Desktop computer. Desktop computer. How many GBs? 500 GB. Most of you might have heard of 500 GBs and 1000 GBs. You know, we are blessed with a computer. Do you agree we are blessed with a computer? And it's called the desktop computer. It's the desktop computer that you have. It's got 80 million GBs. Okay? It's got 80 million GBs. Libraries like this, thousands of libraries like this can be contained in one brain. So you have your power, you have your intelligence. What else you need to succeed? You need to have an aim. How many of you have aims in life? Anybody? What is your aim? To be the
finance ministry of this country. Okay, anybody else? Anybody else with the aims? Come on. Anyway, we'll do with this. Why not become the finance minister of the country? When you have to have an aim, have an impossible looking aim, have an impossible aim that you have to achieve. Okay. How many of you have heard the story of Arjuna and the bird's eye? Bird's eye. Can anybody come and narrate the story? Don't be shy, I'm in the same crowd. You want to come? Thank you. Sir, Dronacharya asked all his students to come and shoot on the eye of the bird. But when he asked like the other Pandavas and Kauravas, everybody used to see like miss the whole bird or the tree or the bushes or anything like that. But when Arjuna came, he said, I see only the eye. And I can Okay, sorry for the interruption. Okay, thanks for coming. I'll just repeat the story. द्रोणाचार्य एक बार पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, ठीक है? जब वो धनुर्विद्या सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, उसके ऊपर निशाना लगाओ। तो जब पांडवों ने निशाना लगाया तो उन्होंने सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई देता है, किसी ने कहा मुझे पत्तियां दिखाई देती है, किसी ने कहा मुझे टहनियां दिखाई देती है, और केवल अर्जुन ही था जिसने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई देती है। और उसने निशाना साधा और सीधा वो जाके चिड़िया की आंख में जाके लगा। सो यू हैव टू हैव एन एम, इफ यू डोंट हैव एन एम, आपके लाइफ में क्या करना है, आपको उसको फाइन ट्यून करना है। जैसे इन्होंने कहा कि इनको फिनांस मिनिस्ट्री में कुछ करना है, तो ये नहीं करना है फिनांस मिनिस्ट्री में करना है, आप एक एम बना सकते हो मेरे को फिनांस मिनिस्टर होना है, ठीक है? तो यू हैव टू फाइन ट्यून। इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, इट्स नॉट ओनली good to say that I want to become a doctor. I want to become, I want to become a radiologist. I want to become a cardiologist. I want to become a physician. What do you want to be? You have to fine tune your aim. Unless you won't fine tune your aim, you will keep going left, right, and you won't achieve your aim. So after the what of the aim is the why of the aim. Why do you have that aim? Why do you want to have that aim? What is your motivation? What is your motive for action? आपको एम तक पहुंचने का सोच क्या है? What is your अगर कोई ओलंपिक एथलीट है, वो रोज सुबह उठता है, रोज सुबह वो दौड़ने जाता है, रोज सुबह वो अपनी एक्सरसाइज करता है, क्योंकि उसका मोटिवेशन है कि he wants to get laurels for the country. He wants to get name for his family and his parents. So आपका जो एम है, आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू हैव, व्हाट इज योर एम एंड व्हाई डू यू वांट इट? यू शुड बी वेरी श्योर ऑफ व्हाई यू आर वांटिंग, मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज द व्हाई। द थर्ड थिंग इज आफ्टर द व्हाट एंड व्हाई इज व्हेन। सो एवरीथिंग कम्स विद अ टाइम लिमिट। ओके, राइट और रॉन्ग? किस किस चीज की टाइम लिमिट होती है? आपको मोबाइल का रिचार्ज करने की टाइम लिमिट होती है, आपको गैस भराने की टाइम लिमिट होती है, आपको बिजली का बिल देने की टाइम लिमिट होती है। तो आपका जो एम है, यू कांट से कि मेरा एम डॉक्टर बनना है। अरे डॉक्टर कब बनना है, किस साल में बनना है? 2000, अगर आप अभी 11th में है, अभी 12th में है, तो यू कैन हैव एन एम कि बाय 2020 or so you will become a doctor, ठीक है? तो यू हैव टू हैव योर टाइम लिमिट। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें टाइम लिमिट करना है कि मेरे को अगर एक महीने में पूरा चैप्टर खत्म करना है तो 15 दिन में आई शुड बी एबल टू फिनिश हाफ द चैप्टर। सो आफ्टर द व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ डू यू वांट टू अचीव इट? सो how many seconds are there in a day? Calculate fast. Anybody? Any mathematical genius? मोबाइल पे कर लो ना, मोबाइल पे वो कैलकुलेटर है। हाँ, so I'll tell you, there are 86,400 seconds in a day, ठीक है? So this is the same time, this is the same 86,400 seconds that is given to a king or a pauper.
राजा या रंग को, ठीक है, या सक्सेसफुल आदमी या नॉट सो सक्सेसफुल आदमी को सेम टाइम मिलता है, सेम वही 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं. व्हाट यू डू विद दिस टाइम? आप या तो टाइम पूरा अपना टीवी देखने में निकाल दो, या आजकल लेटेस्ट है मोबाइल पे गेम खेलने में निकाल दो, या वीडियो गेम खेलने में निकाल दो. सो व्हाट, व्हाई, व्हेन? सो you have to have a time limit of your goal, and after you know the what, when, why and how of the goal, the thing that I request you is to write your aim. किसी ने अपना एम लिखा है, मेरे को लाइफ में क्या बनना है? कभी लिखा है? किसी ने नहीं? Okay, you know who is it? So, once you have decided your aim, you have to write it. You know, it has been found that 80%, 80% लोग जो अपना एम लिखते हैं, वो उसको सार्थक कर पाते हैं, वो उसको अचीव कर पाते हैं. So when you write your aim, your psycho-neuromuscular mechanism gets activated. Your psyche, आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, आपके न्यूरॉन्स, जो आपके नर्व्स, ठीक है, और आपके मसल्स एकजुट हो जाते हैं आपको आपका एम अचीव कराने में. So that is the what, why, when and how of the aim and writing the aim. I'll tell you a story, you know, how somebody achieved his aim. So after the Air Force, after leaving the Air Force, we started a helicopter simulator. You know what is simulator? Huh? Everybody knows. Okay. So we started a helicopter simulator. वहाँ हमारे ऑफिस में there used to be a person who used to come very often. His name was Mr. Malkar Parekh. He was the managing director of a company called Millennium Aerodynamics. So उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एविएशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेल्समैन हैं. ठीक है, he was the biggest salesman of aviation industry. For him to do a deal of 5 or 10 crores was a everyday affair. वो रोज 5-10 करोड़ की डील कर लेते थे, और वो महीने में 20 दिन फॉरेन में रहते थे, बाहर रहते थे. तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनसे दोस्ती करूं, आई बी फ्रेंड्स विद हिम एंड गेट टू लर्न समथिंग अबाउट सेल्समैनशिप फ्रॉम हिम. सो एज लक वुड हैव इट, एक बार वो हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने बताया कि वो हेलीकॉप्टर चलाना सीखना चाहते हैं. तो मैंने पूछा, आप हेलीकॉप्टर चलाना क्यों सीखना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि हिज कंपनी मिलेनियम एरोडायनामिक्स has become the authorized agent of HAL. HAL का नाम सुना है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. उसका हेलीकॉप्टर बेचने के लिए they have become the authorized, the company has become the authorized agent. तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, and he wanted to learn to fly helicopters so that he can sell it better. So that जैसे आप मारुति चलाना जानते हैं तो मारुति बेहतर बेच सकते हैं, तो उस तरह से वो चाहते थे कि वो हेलीकॉप्टर चलाना सीखे जिससे वो हेलीकॉप्टर बेहतर बेच सकें. सो उनको while I was teaching him to fly helicopters, we became good friends. तो एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर आप 20 days in a month you are out of the country making deals and all that. So what is the aim? What is your aim in life? So he said, my aim is to get business for the company. I said, that is the aim for the company. What is your aim? What is your aim in life? So he was silent. An old man, 52.